So today we will do the definition of dual space. Dual space of N or conjugate space of N. N is here, N is a normed linear space. Is a normed linear space, and it is also denoted by that is N star. If I am taking X as a non-linear space, then it will be X star. If we are taking a non-linear space N star and N, then the conjugate space is N star. हमने इसकी definition करनी है. Bounded linear functional आपको बता दिया कि कोई भी एक linear functional अगर bounded होता है, any function f defined on the vector space N to the field of scalars. This is the field of scalars, right? If it satisfies three conditions, f is linear. Number two, f is bounded, right? Linear means it is closed under addition and scalar multiplication. That is f of alpha x plus beta y is equal to f of alpha x plus beta f of y. ठीक है जी, where x and y they are coming from N and alpha and beta they are coming from K. Bounded means f of x mod is less than or equal to K into norm of x. It implies f is a bounded linear functional on N. So this is one kind of bounded linear function. अगर जितने भी bounded linear functional है उनको एक सेट में बंद कर दिया जाए. अब हम क्या करने जा रहे हैं, जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है f, वेयर आप लिखेंगे f फ्रॉम नॉर्म स्पेस n to k is a bounded linear functional. हमने सारे फंक्शन एक सेट में बंद कर दिए, ठीक है, और वो सारे क्या हैं, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है. एंड द नेम इज बीटा एन के. आप बीटा एक्स वाई याद करें. बीटा एक्स वाई क्या था? बीटा एक्स वाई इट इज द space of all bounded continuous, one and the same thing. Boundedness implies continuity. Bounded continuous linear transformations from x to y. ठीक है, बिकॉज वहां पे टी था नाम, पहली बात जो एलिमेंट्स है उनका नाम टी था, और फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस और वन नॉन लीनियर स्पेस टू द अनदर नॉन लीनियर स्पेस. यहाँ पे दिस इज द space, this is a vector space to the field of scalars. So this is another name, and this is called n star. This is called n star. And if I will take x, if x is my non-linear space, if x is a non-linear space and k is the field of scalars, k is the field of scalar, then bxk is equal to same f, such that f from x to k is a bounded linear functional. Bounded linear function, and it is denoted by x star, which is called conjugate space of x. Conjugate space of x. This is conjugate space of n. ये है बेटा जी, this is a definition of conjugate space or dual space. This is the dual space n star. This is the dual space x star. If I will replace x by n, the definition remains same. Dual space x star. Dual space of x means x star. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. जब मैंने बोला ड्यूल स्पेस, ठीक है, अगर मेरा x जो है मेरी एनएलएस चल रही है, तो ड्यूल स्पेस मींस x स्टार. व्हेन आई विल से ड्यूल स्पेस ऑफ x, तो भी क्या आएगा, x स्टार आएगा, राइट, और n स्टार. हाँ जी, यहां तक डेफिनेशन क्लियर हो गई है ड्यूल स्पेस की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
prove that beta xk or x star is a normed, is a Banach space, is a Banach space. ठीक है जी, under the norm, under the norm f is equal to, how the norm is defined, सुप्रीमम। अब यहाँ पे मॉड लगेगा क्योंकि एक फंक्शन है, ये लीनियर नहीं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ऑपरेटर नहीं है। where norm of x is less than or equal to 1, where x belongs to capital X. So they prove that beta x or x star is a Banach space whenever x is a Banach space. Whenever x is a Banach space. So beta ji, what to do? Banach space में क्या क्या आ गया? Number one, x star is a वेक्टर स्पेस। पहला पॉइंट ये वेक्टर स्पेस है। इसमें दो बातें आ गई। नंबर वन, x star is not equal to phi. Number two, x star is closed under addition। ठीक है जी। एंड सी, नंबर वन के नीचे तीन ऑप्शन आ गई। x star is a closed under scalar multiplication। राइट, ये तीन बातें आ गई वेक्टर स्पेस के अंदर। नंबर टू, वेक्टर स्पेस प्रूव हो गया। नंबर टू प्रूव करना है आपने x star is a normed linear space under the norm हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसमें बेटा जी चार प्रॉपर्टीज। नंबर वन, norm of f is greater than or equal to 0। norm of, इसमें ABCD डाल लीजिए। norm of f is equal to 0 if and only if f is equal to 0। C is norm of f, alpha f is equal to alpha mod of alpha norm of f। and D is f plus g norm is less than or equal to norm of f plus norm of g, right, using the norm function, and where f and g, they are coming from x star, they are coming from x star, right? F and g, they are coming from x star, and alpha, it is coming from the field of scalars। this is the second part। now the third part क्या प्रूव करना है? x star is a complete space whenever x is a complete space। So we have already done this kind of question in beta xy। Exactly the question is same। जहां पे norm of tx लगाते हो वहां पे f of x mod आना है। Is it clear? So exact, और जहां पे आपका y है वहां k है और x x की जगह पे है। So the proof जो है that will be done by you, right? So I am coming to the some kind of dual spaces। Now you will write some kinds of dual spaces। अब हम dual spaces के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके practical examples करेंगे। The form of some dual spaces।